बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजुअल कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पे मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज़ का आज छठा लेक्चर है और मैं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर फ़ाद मुनीर अब्बासी। यूजुअली जैसा कि हम प्रोसीड कर रहे हैं हमेशा की तरह, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आई लाइक टू गिव यू लेआउट ऑफ दिस लेक्चर कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। इनिशियली पिछले लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा और क्या कुछ देखा, ज़रा ब्रीफली उसको गो थ्रू करेंगे वेरी क्विकली। आफ्टर दैट कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं जो कि लास्ट लेक्चर से ही कंटिन्यू करेंगे। इट वाज सॉर्ट ऑफ अ थिंग जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने किया, फ्लूइड ट्रैप बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, जिनमें से एक लोअर प्लेट एट रेस्ट और अपर प्लेट एट इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी। उसको लेके आज भी उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे कि कैसे एनालिसिस किया जाता है ऐसे फिनोमेना का, ऐसे फ्लो प्रॉब्लम्स का जिसमें फ्लूइड इज ट्रैप्ड बिटवीन टू प्लेट्स एंड वन प्लेट इज स्टेशनरी एंड द अदर प्लेट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि पिछली चीज़ों से रिलेटेड हैं। टेक फॉर इंस्टेंस मटेरियल डिस्क्रिप्शन, मटेरियल कोऑर्डिनेट्स एंड मटेरियल वेरिएबल्स। इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट दीज आर। देन वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ special descriptions, special coordinates and special variables। इनको एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि what these things are। Afterwards we'll go through the Lambert Euler acceleration formula और इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स करेंगे। ये जो the Lambert Euler acceleration formula है, it is closely related to what we did in the previous lecture, जो कि हमारा वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट अ पॉइंट से रिलेटेड था, जहाँ हमने टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था। इट वाज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सम ऑफ लोकल डेरिवेटिव एंड कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल समराइज द प्रोसीडिंग्स ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में क्या कुछ किया आखिर में ब्रीफली ज़रा उसको समराइज कर दूंगा आपके लिए। So let's start. In the previous lecture we studied about Newtonian and non-Newtonian fluids. अगर उसको थोड़ा सा रिकॉल करें आप, तो हमने न्यूटोनियन फ्लूइड को लेके चले थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को लेके चले थे, एंड वी डिस्कस दैट एंड देखा हमने कि कैसे रिलेशन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द डिफॉर्मेशन रेट एंड द अप्लाइड स्ट्रेस। एंड वी saw that in the Newton's law of viscosity there is a linear relationship between the stress and the deformation rate। वो लीनियर रिलेशनशिप इस चीज़ की पहचान है कि ये रिलेशनशिप न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए होल्ड करता है, जबकि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस के अंदर द रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड स्ट्रेस एंड द डिफॉर्मेशन रेट वाज नॉन लीनियर, जिसको हमने बाद में अपैरेंट विस्कोसिटी के अंदर भी डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, जिनके अंदर टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट एंड विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स शामिल थे। थोड़ा सा अगर उसको रिकॉल करें तो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स वो तमाम फ्लूइड्स थे जिनकी अपैरेंट विस्कोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करती। दोज वर से अ सॉर्ट ऑफ शीयर डिपेंडेंट फ्लूइड्स, जिनके जो अपैरेंट विस्कोसिटी है इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद द शीयर रेट। जैसे जैसे हम उसको से डिफॉर्म करें, उसकी अपैरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है डिपेंडिंग अपॉन आइदर इट इज़ शीयर थिनिंग और शीयर थिकनिंग फ्लूइड। तीसरी एक कैटेगरी जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स के अंदर हमने डिस्कस की थी वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स की थी। एंड बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स जो एक सर्टेन अमाउंट तक स्ट्रेस बियर कर सकें और उसके बाद दे जस्ट स्टार्ट फ्लोइंग, and then after the yield stress is approached, so then there is a linear relationship between the applied stress and the deformation rate। Then the other category was time dependent fluids, जिनको हमने analyze किया, and third category was viscoelastic fluids, जिसमें I told you कि viscoelastic के नाम को ज़हन में रखें, and it is a combination of two words, say visco and elastic, and we saw that कि viscous का क्या मानी है और elastic का क्या मतलब है। तो विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स हैं जिनमें विस्कोसिटी प्लस इलास्टिसिटी, ये दोनों कैटेगरीज, ये दोनों क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं। अप टू अ लार्ज एक्सटेंट दे जस्ट रिस्टोर देयर ओरिजिनल पोजीशन जहाँ से उनकी डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई हो। अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो
एक रबर की एग्जांपल आपको दी थी कि जैसे उस पर से स्ट्रेस रिमूव की जाती है तो इट टेंड्स टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स में भी ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है कि जब अप्लाइड स्ट्रेस रिमूव की जाएगी तो दे टेंड टू, कुछ फ्लूइड्स हैं जो फुली रिटेन कर लेते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन जहाँ से वो डिफॉर्म हुए थे, और कुछ फ्लूइड्स हैं जो पार्शली रिटेन कर लेते हैं वो पोजीशन जहाँ से वो डिफॉर्म हुए थे। सो ऐसे फ्लूइड्स जिनमें विस्कोसिटी के इफ़ेक्ट्स प्लस इलास्टिसिटी के इफ़ेक्ट्स पाए जाएं उनको विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स का हमने नाम दिया था। तो ये 3 कैटेगरीज़ के अंदर हमने डिवाइड किया था नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को, और इनको डिटेल से देखा था इन द प्रीवियस लेक्चर। आफ्टरवर्ड्स प्रीवियस लेक्चर के आखिर में हमने 2 एग्जांपल्स सॉल्व की थी जो कि हमारा से पहला टास्क था रिलेटेड टू मैथमेटिकल वर्क इन दिस कोर्स। आज उसी वर्क को कंटिन्यू करेंगे और कुछ मज़ीद एग्जांपल्स को देखेंगे और उसको सॉल्व करके एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से फ्लूइड ट्रैप्ड बिटवीन 2 प्लेट्स को एनालाइज किया जाता है, किस तरह स्ट्रेस मेजर की जाती है और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी उस स्ट्रेस को एनालाइज करने और डिटरमिन करने के लिए। नाउ ज़रूरी है कि इससे प्रोसीड करने के लिए और इस लेक्चर से ऑनवर्ड्स ये चीज़ ज़रूरी है कि अभी तक जितना भी काम हुआ, पर्टिकुलरली जो हमने रिलेशनशिप्स विस्कोसिटी के डेवलप किए, वो ज़रूर आपको ठीक से जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, प्लस व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप उनको रिप्रोड्यूस कर सकें तो यू शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस दीज रिलेशनशिप्स के न्यूटोनियन फ्लूइड्स का क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज़ द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड व्हाट इज़ द पावर लॉ मॉडल फॉर द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, व्हाट इज़ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और किस तरीके से शेयर थिनिंग और शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स के लिए, डाइलेटेंट फ्लूइड्स के लिए एन की वैल्यू जो है वो वेरी करती है। इन वन केस इट इज़ लेस देन 1, इन द अदर केस इट इज़ ग्रेटर देन 1। सो अभी तक जो कुछ हमने किया, मैंने प्रीवियस लेक्चर के एंड पे भी आपको एक चीज़ कही थी कि उसको कोशिश करें समराइज़ करके उसको ठीक से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि अब आज के लेक्चर में भी और ऑनवर्ड्स ये तमाम रिलेशनशिप्स यूज़ होंगे, पर्टिकुलरली जो भी मैथमेटिकल काम हम करने जा रहे हैं और जिस तरीके से हम एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं इस कोर्स के अंदर। तो अब इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आज के लेक्चर के भी शुरू में हम 2 सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। अभी तक वो सॉल्व नहीं है, सो इस लेक्चर में हम उसको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से एनालिसिस को किया जाता है गिवन प्रॉब्लम को देखते हुए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर एंड द फर्स्ट एग्जांपल which we have to solve in this lecture is that of a methyl iodide, और प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ऐसे है कि मिथाइल आयोडाइड एट अ थिकनेस ऑफ 10 mm एंड हैविंग अ विस्कोसिटी ऑफ 0.005 पास्कल सेकेंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थिन फिल्म मे बी कंसिडर्ड पैराबोलिक। ये एक चीज़ ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखें। आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल once I complete the statement. Well, what we have to do, determine the shear stress at y equal to 0, 5 and 10 millimeter for the surface of from the surface of the plate. So given हमें कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले ये कि मिथाइल आयोडाइड है and it's flowing over a flat plate, lower plate at rest है and it's moving, और जो thickness है इस मिथाइल आयोडाइड की which is flowing it is 10 millimeter, यानी कि surface से जो टॉप मोस्ट फ्लूइड की जो लेयर है उसका डिस्टेंस 10 मिलीमीटर है एंड द विस्कोसिटी इज गिवन विच इज़ 0.005 पास्कल सेकेंड। सो ये क्वांटिटी है जो कि ऑल्सो विल बी यूटिलाइज्ड इन दिस कैलकुलेशन एंड एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो गिवन टेम्परेचर इज ऑल्सो नोन. Then the other thing is what we have to find out. We have to calculate the shear stress at y equal to 0, 5 and 10 millimeter from the surface of the plate. देखें स्ट्रेस हमने कैलकुलेट करनी है और 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेट करनी है। y0 का मतलब है कि हमने सरफेस के ऊपर भी स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है एट 5 मिलीमीटर, विच मीन्स कि कहीं सेंटर में सरफेस से लेके तो फ्लूइड की टॉप लेयर के दरमियान में कहीं पे भी स्ट्रेस जो है वो डिटरमिन करनी है एंड देन
y एट इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी कि टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर कितनी स्ट्रेस लग रही है फ्लूइड की, ये चीज़ भी डिटरमिन करनी है। और हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले इसकी थिकनेस जो कि 10 मिलीमीटर है, एंड दूसरी चीज़ विस्कोसिटी जो कि 005 पास्कल सेकेंड है, एंड तीसरी चीज़ जो कि अपर सरफेस जो मूव कर रही है वेलोसिटी, इस फिगर को आप देखें तो इट इज़ गिवन दैट u इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड एट y इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी टॉप मोस्ट जो सरफेस है वो मूव कर रही है एट वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो स्ट्रेस का रिलेशनशिप तो अगर प्रीवियस लेक्चर से आपके जहन में है तो इट वाज समथिंग लाइक प्रोडक्ट ऑफ विस्कोसिटी विद द डिफॉर्मेशन रेट, दैट वाज du बाई dy। उसी चीज़ को यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें वेलोसिटी नोन हो, du बाई dy यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए इट इज़ मैंडेटरी कि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि जब तक वेलोसिटी आपको नहीं पता आप उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो वेलोसिटी के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा सिवाय एक सेंटेंस के, अगर ये आप तीसरा सेंटेंस स्टेटमेंट में देखें दैट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थिन फिल्म मे बी कंसिडर्ड पैराबोलिक। ना वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक है, सो इट इज़ एन आर्बिट्रेरी स्टेटमेंट। तो हम अपनी तरफ से एक पैराबोलिक किस्म की वेलोसिटी सपोज करेंगे और फिर उसको एनालाइज उसको कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे मेकिंग यूज़ ऑफ द बाउंड्री कंडीशंस जो कि हमें गिवन है। जो वेलोसिटी एट द एंड हमें पता है कि टॉप मोस्ट सरफेस के ऊपर क्या वेलोसिटी है और बॉटम सरफेस के ऊपर क्या वेलोसिटी है। अच्छा, दो कंडीशंस यहाँ ज़रूर आपके जहन से गुजारूंगा और आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ है वो ये कि ये जो वेलोसिटी हमें गिवन है एट द टॉप मोस्ट सरफेस, एक ये बाउंड्री कंडीशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें। एंड द सेकंड कंडीशन इज़ द नो स्लिप कंडीशन विच स्टेटेड के फ्लूइड एडजेसेंट टू द बाउंड्री, सॉलिड बाउंड्री के साथ जो भी फ्लूइड है, इट मूव्स विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द बाउंड्री। सो जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से बाउंड्री मूव करेगी, फ्लूइड भी जो उस बाउंड्री के साथ है वो भी उसी स्पीड, उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड द नो स्लिप कंडीशन विच मीन्स दैट देयर इज नो स्लिप बिटवीन द फ्लूइड एंड द सॉलिड बाउंड्री। ओके, अपर सरफेस के ऊपर तो वेलोसिटी हमें गिवन है, लोअर प्लेट एट रेस्ट है, सो देयर इज अ हिडन कंडीशन इन दिस व्हिच यू हैव टू फिगर आउट कि चूंकि ये प्लेट एट रेस्ट है, जो लोअर प्लेट है एट y इक्वल टू 0, तो इसके एडजेसेंट और इसके साथ जितना भी फ्लूइड होगा वो तमाम एट रेस्ट ही होगा बिकॉज ऑफ द नो स्लिप कंडीशन। सो दिस इज अनदर बाउंड्री कंडीशन जो कि हम यूज करेंगे इन दिस एनालिसिस। सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट के given it is that the boundary condition that the fluid, okay, solution के लिए चूंकि it was given that the velocity is parabolic, so we will assume a velocity component of the form u is equal to a plus by plus सी वाई स्क्वायर। चूँकि पैराबोलिक है, सो हमने एक वेलोसिटी प्रोफाइल एज्यूम की विच इज़ क्वाड्रेटिक, इट एक्सटेंड्स टू द वाई टू द पावर 2। सो एक जर्नल हमने वेलोसिटी प्रोफाइल एज्यूम कर ली जो कि एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर सकती है। अब इसमें ए, बी एंड सी तीन कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि अननोन है। अब जब तक ये कॉन्स्टेंट फुली डिटरमिन नहीं हो सकते तो हम इस फ्लो की वेलोसिटी को डिटरमिन नहीं कर सकते। कीप इन माइंड कि ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें वेलोसिटी और उसका डेरिवेटिव नोन नहीं होगा स्ट्रेसेस कैलकुलेट नहीं हो सकेंगी। तो चूंकि हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है इसलिए ज़रूरी है कि हमें वेलोसिटी नोन हो एंड देन विल गो फॉर इट्स डेरिवेटिव। तो वेलोसिटी के लिए एक ही चीज़ पता थी एंड दैट वाज दैट इट इज़ ऑफ पैराबोलिक टाइप। सो हमने एक जनरल रिलेशनशिप ले लिया जो कि एक पैराबोला को एक्सप्लेन कर सकता है। नाउ ए, बी एंड सी तीन अननोन्स हैं जिनको हमने डिटरमिन करना है मेकिंग यूज़ ऑफ द बाउंड्री कंडीशंस इन दिस प्रॉब्लम। सबसे पहली जो बाउंड्री कंडीशन है विच आई mentioned earlier that u is equal to 0 at y is equal to 0। जो लोअर प्लेट है चूंकि that is at rest, so velocity at that plate adjacent to that plate will be 0। दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है जो कि हमें गिवन है also
that is u is equal to 0.1 meter per second at y is equal to 10 millimeter और 0.01 मीटर, यानी टॉप मोस्ट सरफेस के ऊपर अगर आप प्रीवियस स्लाइड के ऊपर देखें तो इट इज गिवन के दिस इज गिवन दैट वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट सरफेस इज 0.1 मीटर पर सेकंड. सो दूसरी कंडीशन तो ये होगी. अब तीसरी कंडीशन एक जो हम इसी कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए कैलकुलेट करेंगे, दैट इज and you will see what it comes out to be. That is derivative of u. तीसरी जो कंडीशन है जो हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हुए हम डिटरमिन करेंगे, दैट स्टेट्स दैट du by dy is equal to 0 at y is equal to 0.01 मीटर. यानी टॉप मोस्ट सरफेस के ऊपर वेलोसिटी तो हमें गिवन है, तो हमने ये भी साथ एज्यूम कर लिया और कैलकुलेट कर लिया इस वेलोसिटी को देखते हुए कि इसका डेरिवेटिव, इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव उस सरफेस के ऊपर 0 होगा, बिकॉज एट y equal to 0.1 at the topmost surface the velocity is constant which is 0.1 meter per second. So हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करके we saw that it is 0 at that point as well. So ये तीन बाउंड्री कंडीशंस यूज करते हुए हम इन तीन कॉन्स्टेंट्स को डिटरमिन करेंगे, जो कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए इस लेवल के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई गेस. सिंपली स्टार्ट करें अगर पहली बाउंड्री कंडीशन से विच इज u इज इक्वल टू 0 एट y इक्वल टू 0. कंडीशन A हमें यूज करेंगे which says that u is equal to 0 at y is equal to 0. So when u is equal to 0, this means 0 अपनी ओरिजिनल जो assumed velocity है इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें. So making use of this boundary condition into 1, a plus b into 0 plus c into 0 square. So this gives us that a is equal to 0. So पहली बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हुए हमने देखा कि जो वेलोसिटी हमने सपोज की थी उसमें जो कांस्टेंट अपीयर है a, this comes out to be 0. So the velocity is actually of the form by plus cy square. Okay, the actual velocity is of the form u is equal to by plus cy square because a comes out to be 0, making use of the first boundary condition. इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे दें. Now we'll use this equation for the further analysis और दूसरी boundary condition use करेंगे which says that u is equal to 0.1 meter per second at y is equal to 0.01. Now as u is equal to 0.1 meter per second at y is equal to 0.01 meter using boundary condition B. So equation 2 के अंदर इसको जब पुट करेंगे 0.01 into B plus C into 0.01 square equals 0.1. y की वैल्यू हमने पुट कर दी, y की वैल्यू हमने पुट की एंड उस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी की वैल्यू थी वो भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दी. So this is another condition, name it as
इक्वेशन 3। और तीसरी बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक du by dy is equal to 0 at, you can write it from C, and here you can write it from B at y is equal to 0.01. So du by dy is equal to b plus 2cy, and du by dy at y is equal to 0.01 equals 0 equals b plus 2c into 0.01. So इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो इट कम्स आउट टू बी 0.01 c is equal to minus b by 2. Mark it as equation 4. इक्वेशन 4 में से c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 3 के अंदर, एंड यू विल फाइंड आउट दैट 0.01 b plus minus b by 2 0.01 equals 0.1. हमने c की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 4 से कैलकुलेट करके इक्वेशन 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी. नाउ अब what is remaining, it's just to simplify this and find the value of b here. You can say 0.01 b 1 minus 1 by 2 is equal to 0.1. मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो you can write it b over 100 into 2 is equal to 1 by 10. यहाँ से the value of b comes out to be 20. b की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें वापस इक्वेशन 4 के अंदर, क्योंकि हमें c की भी वैल्यू साथ चाहिए. तो जब b की वैल्यू यहाँ 20 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ c itself, which will come out to be 0.01 into c is equal to minus 20 over 2, which is minus 10, or you can say that c comes out to be minus 1000. Now a, b and c की तीनों की वैल्यूज हमें पता चल गई और we found it out. तो
हमें ओवरऑल वेलोसिटी कंपोनेंट जो वेलोसिटी हमने अज्यूम की थी उसकी कंप्लीटली डिटर्मिनेशन हो गई. A which was 0, so we neglect that. B which was 20, so by minus, because C comes out to be minus 1000 y square. Now this is the velocity, the parabolic velocity, जिसको हम कैलकुलेट करने के लिए इतनी सारी कोशिश कर रहे थे. और इस वेलोसिटी को यूज़ करते हुए विल फाइंड द स्ट्रेस, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें वेलोसिटी का डेरिवेटिव पता होना चाहिए. सो वी गो फॉर du by dy which is 20 minus 2000 y. du by dy फाइंड आउट कर लिया. आप सिंपल स्ट्रेस के लिए हम से फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेस एट tau yx at y is equal to 0. लोअर प्लेट के ऊपर स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, हम वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं. एंड सिंपली relationship of tau yx is equal to eta du by dy at y equal to 0. Derivative of velocity at y equal to 0 हमें known है, and the viscosity is also known to us, which is given into our original problem. अगर आप उसको याद रखें तो it's good, नहीं याद तो we can see it, which was, say here, the viscosity of methyl iodide is 0.005 pascal second. So simply substituting this viscosity, (0.005), which is the value of viscosity for methyl iodide, and du by dy at y equal to 0, which comes out to be 20, because when you will substitute y equal to 0 into this relationship, तो ये part इसका vanish कर जाएगा and only 20 will survive. So this comes out to be this is the answer of the first part, where we had to find the stress on the lower plate at y equal to 0. So you saw that कि हमने किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करके सॉल्व किया, क्योंकि वेलोसिटी हमें अननोन थी. तो वेलोसिटी को डिटरमिन करने के लिए हमने एक सिंपल इक्वेशन सपोज की, बिकॉज इट वाज गिवन दैट वेलोसिटी इज ऑफ पैराबोलिक टाइप, एंड देन वी फाइंड आउट 3 कांस्टेंट्स मेकिंग यूज ऑफ द 3 बाउंड्री कंडीशंस. आफ्टरवर्ड्स उसका डेरिवेटिव लेके value of stress at y equal to 0 we computed at this. Now we also have to compute the value of stress at y equal to 5 millimeter and y equal to 10 millimeter. So we will go for that as well. In the part 2, tau yx at y is equal to 5 millimeter, and you can calculate it making use of tau yx is equal to mu du by dy at y is equal to 5 millimeter, which becomes 0.005. So viscosity is given, which is 0.005, the value of viscosity, and then substitute y equal to 0.005 into the derivative of velocity, which we calculated in the previous slide, which is 20,000 into 0.005. और मज़ीद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो you can write it as
20 minus which comes out to be so this is the value of stress for y equal to 5 millimeter, and the last thing which remains here is we have to find out stress at the surface Now if you recall तो surface हमारी boundary condition भी जो surface के ऊपर which was u is equal to 0.1 meter per second was given also at the surface. तो अगर थोड़ा सा recall करें तो चूंकि हमें derivative चाहिए तो हमने एक C condition जो suppose की थी that was चूंकि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी 0 एट y इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर सो tau at yx is 0 at y is equal to 10 मिलीमीटर चूंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव 0 है at the surface, so the ultimately the stress at the surface also vanishes. ये सारा प्रोसीजर एक दफ़ा गो थ्रू किया तो आप इसको देख के एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे हमें गिवन बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हुए हम पहले वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं एंड देन अगर उसके साथ हमें विस्कोसिटी भी गिवन हो तो वी कैन फाइंड द स्ट्रेसेस एट ईच पॉइंट in the domain which is given to us in the flow field. जैसे कि y0 के ऊपर y 5 मिलीमीटर एंड y 10 मिलीमीटर के ऊपर हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट की इन दिस एग्जांपल एंड आई विल रादर प्रेफर कि आप इसको खुद अभी से ही सॉल्व करें इस लेक्चर के बाद ताकि एक दफ़ा चीज़ों को आप खुद गो थ्रू करके चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लें. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ अ डाइलेटेंट फ्लूइड. Keep this thing in mind. This is the statement reads that the flow of a dilatant fluid. So this is not the case of Newtonian fluid. Keep this thing in mind, which will be used in this analysis. It is observed that the velocity distribution within the fluid film can be expressed as okay. Now velocity is given here. So हमें वो सारा काम जो constant हमने determine किए थे previous example के अंदर वो यहाँ पे नहीं करने पड़ेंगे. यहाँ पे किस तरीके से हम करते हैं और क्या चीज़ हमें find करनी है we'll see. Where h is the film thickness and u max is the maximum velocity. So u max is the maximum velocity which is constant and provided separately. Y is measured from the solid surface. So y is measured from top to bottom from the solid surface. The velocity of the viscosity of the fluid is 0.5 Newton second per meter square. So viscosity is also provided to us and n is equal to 1.3. Okay. This is for the, as I told you earlier, that this is for the dilatant fluid which is non-Newtonian fluid. So हमें n की value भी यहाँ पे given है which is 1.3. Now what we have to do? Calculate the shear stress at the solid surface when u max is equal to 0.2 meter per second and h is equal to 1 centimeter. What should be the viscosity? This is one thing which we have to calculate. And second thing is what should be the viscosity of a Newtonian fluid to induce the same shear stress value for similar velocity profile and the same maximum velocity. मतलब कि एक दफ़ा जब हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लेंगे तो वी हैव टू फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ अ न्यूटोनियन फ्लूइड कि अगर इस डाइलेटेंट फ्लूइड की जगह न्यूटोनियन फ्लूइड होता तो उसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए थी कि यही स्ट्रेसेस हमें मिल जाती और यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी अगर हम एज्यूम करते हैं. विल सी कि कैसे हम इस एग्जांपल को परस्यू करते हैं. दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल व्हिच इज गिवन टू अस and this states that u over u max is equal to 2 into
y over h minus 1 by 3 y by h whole cube. Since this u max is constant, तो हम इस अपनी velocity profile का इसको equation 1 का नाम दे दें. Let's calculate the derivative of this. u max को अलग कर लें and then simply calculate the derivative of velocity with respect to y. It will come out to be 2 over h minus, say, okay, y square by h cube, or you can say that du by dy is equal to 2 into u max over h minus y square by h cube into u max. Simply हमने u max को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे. So this is the derivative of velocity profile जिसको यूज करते हुए हम स्ट्रेसेस फाइंड आउट करेंगे. ना एक और चीज़ है, इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. It is given that u max is equal to 0.2 meter per second and h is 1 centimeter. So ये दोनों चीज़ें हम यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. और दूसरी चीज़ कि we have to calculate the shear stress at the solid surface. Solid surface के ऊपर, लोअर बाउंड्री के ऊपर हमने स्ट्रेसेस मेजर करनी है. So let's see how we go for it. du by dy at solid surface which lies at y is equal to 0. 2. The value of u max is 0.2 and h is 1 centimeter, which comes out to be 0.01 meter. क्योंकि u max is in meter per second, so हमने अपनी जो हाइट थी h उसको भी कन्वर्ट कर लिया into meters. It comes out to be 40. Now this और इसके यूनिट्स चलें, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि इसको डिटरमिन करें कि जनाब किस तरीके से हम इसके यूनिट्स को डिटरमिन कर सकते हैं. और आइदर इट विल बी इन मीटर पर सेकंड और 1 बाय मीटर, क्योंकि यूनिट्स और डायमेंशंस के ऊपर हमने बड़ी गुफ्तो शनीद ज़रूर की है. तो ये छोटे छोटे काम थोड़ा सा ज़रा स्टेप बाय स्टेप डिटरमिन करते जाएंगे हम क्या कर रहे हैं. और यहाँ पे ये जो 40 क्वांटिटी है इसकी क्या डायमेंशंस होंगी, मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया. सो आई लीव इट अप टू यू टू डिटरमिन के कुछ साथ साथ ज़रा आप भी चीज़ों से फेमिलियर होने लगे. ना नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए किस तरीके से रिलेशनशिप डेवलप होता है, यू शुड बी नोइंग दैट फॉर एग्जांपल टाउ इज इक्वल टू इफ द apparent viscosity is given to us, so it is provided separately, and du by dy to the power and this was the relationship. अगर आप इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे एक k था, जबकि हमें एक्सप्लिसिटली इस एग्जांपल के अंदर हमें विस्कोसिटी की वैल्यू अलग से गिवन है. सो वी हैव टू skip that step and directly put the value of mu, which is the viscosity in this case. So the value of viscosity is 0.5 Newton second per meter square. So and value of n is 1.3. This is the value of mu, and du by dy की value which we calculated and came out to be 40, and n, this n, इस n की जगह value 1.3. And if you simplify it and you calculate it, I calculated it obviously earlier, it comes out to be 60.48. बट इसको ख़ुद भी कैलकुलेट करके वेरीफाई करें कि आया जो मैंने जल्दी जल्दी के अंदर कैलकुलेट की थी आया इट्स करेक्ट और नॉट. सो
जब आप इस एग्जाम्पल को खुद भी सॉल्व करें तो ये कैलकुलेशंस एटलीस्ट एक दफ़ा खुद भी देखा करें. डोंट लीव एवरीथिंग टू द इंस्ट्रक्टर, एटलीस्ट वेरीफाई इट वट एवर वी टीच यू, कि आया ये ठीक भी है ये कैलकुलेशंस ईच एंड एवरी स्टेप के ऊपर, या इट नीड सम फर्दर मॉडिफिकेशंस. आई सी समटाइम्स, यूजुअली मैं क्लास के अंदर टीच करते हुए छोटी छोटी चीज़ें आई लीव इट ओवर टू द स्टूडेंट्स, और समटाइम्स हल्की फुल्की कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर छोड़ दिया करता हूँ कि सिर्फ जो करने वाले स्टूडेंट हैं और जो इनपुट देने वाले स्टूडेंट हैं और जो साथ साथ चलने वाले स्टूडेंट हैं वो डिटरमिन कर सकें कि जनाब ये चीज़ ऐसे नहीं थी ऐसे ही थी, विच शोज़ के हाउ मच इन्वॉल्व अ स्टूडेंट इज़ इन टू अ लेक्चर. सिर्फ ये नहीं है कि बैठ के जनाब बस लेक्चर सुन रहे हैं एंड ऑल दैट थिंग. सो दिस इज़ द स्ट्रेस for a dilatant fluid for Umax is equal to given Umax which is 0.2 meter per second and the height which is 1 centimeter. So dilatant fluid जिसके लिए n की वैल्यू 1.3 थी, the stress came out to be this. दूसरी चीज़ जो हमने इस एग्जाम्पल के अंदर डिटरमिन करनी थी वो बिल्कुल अभी भी डिटरमिन करेंगे, एंड दैट वाज कि अगर ये स्ट्रेसेस हों और ये Umax हो तो हमें न्यूटोनियन फ्लूइड की क्या विस्कोसिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ें सारी रिटेन हो जाए. अगर न्यूटोनियन फ्लूइड के रिलेशनशिप को देखें तो उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप था विस्कोसिटी du by dy. तो डिफरेंस इज कि यहाँ n मौजूद नहीं है फॉर द केस ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड. सो वी हैव टू फाइंड दिस विस्कोसिटी ताकि स्ट्रेसेस भी वही रहे और ये डिफॉर्मेशन रेट जो हमने कैलकुलेट किया ये भी वही रहे, विच इज अ सिंपल टास्क for u du by dy. So the stresses which we calculated came out to be 60.48 and the deformation which we calculated du by dy at y equal to 0 came out to be 40. और अगर इसको सिंप्लीफाई करें और कैलकुलेट करें तो इट कम्स आउट टू बी 1.512. एंड ऑब्वियसली चूंकि ये विस्कोसिटी है तो ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसके डायमेंशंस होगी. नाउ इस वेलोसिटी फील्ड के लिए n was equal to 1.3 and maximum velocity was 0.2 meter per second and h was 1 centimeter. We had to calculate the stress at the solid surface y0 के लिए, वो हमने calculate की. and second thing was the viscosity of a Newtonian fluid जिसके लिए stresses और deformation rate यही रहे. ये दो चीज़ें हमने calculate करनी थी and we did that here. दिस इज़ द विस्कोसिटी जिसके लिए स्ट्रेसेस भी ये रिटेन होंगी, ये स्ट्रेसेस हमें मिल जाएंगी जिनकी वैल्यू 60.48 है और ये डिफॉर्मेशन रेट मिल जाएगा. अगर न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए उसकी विस्कोसिटी 1.512 हो तब ओनली देन इट विल बी द केस ऑफ से न्यूटोनियन फ्लूइड अगर उसकी विस्कोसिटी ये हो. नाउ these two examples showed how to analyze a fluid moving on a say solid surface at rest and the fluid is moving, or fluid trapped between two plates where the lower plate is at rest and upper one is moving with some velocity. दो examples को खुद भी solve करें and then try to manipulate this. अगर इसको आप अपने तरीके से मज़ीद कोई इसके अंदर चेंजिंग करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, वेलोसिटी किसी और तरह की लेके समटाइम्स या n का रेट फ़र्क करके, या देखें कि जनाब जो हमने डायलिटेंट के लिए किया हम इसको शेयर थिनिंग के लिए भी कर सकते हैं, शेयर थिकनिंग के लिए भी कर सकते हैं, और कैसे n की वैल्यू वेरी कर सकते हैं. ये छोटी छोटी चीज़ें अगर करके देखें तो इट विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू. नेक्स्ट जो आज के लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करनी है, उसके लिए पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा कि हमने कुछ चीज़ें जिनसे हम पहले ही गो थ्रू कर चुके हैं. एज देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर द फ्लूइड मोशन, सो एज देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ फील्ड रिप्रेजेंटेशंस एज वेल. जैसे कि फ्लूइड मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो मेथड्स देखे थे, इसी तरह फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी दो ही तरीके यूजुअली यूटिलाइज किए जाते हैं. द फर्स्ट वन ऑब्वियसली यू आर फेमिलियर विद दैट,
is the Lagrangian form of field representation, and the second one is the Euler's form of field representation. Well, in the Lagrangian form of field representation, we study the fluid motion and associated properties of each fluid particle by following its position in space as a function of time. जो फ्लूइड डिस्क्रिप्शन के लिए लैग्रांजियन फॉर्म थी, एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर फील्ड डिस्क्रिप्शन के लिए, फील्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए भी लैग्रांजियन फॉर्म वही चीज़ है. व्हाट इज मटेरियल डिस्क्रिप्शन? वेल, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विद ईच फ्लूइड पार्टिकल इज कॉल्ड मटेरियल डिस्क्रिप्शन. अगर एक एक फ्लूइड पार्टिकल को हम डिस्क्राइब करें तो वो मटेरियल डिस्क्रिप्शन के जुमरे में आएगी. What are the material coordinates? Now, the set of space coordinates associated with each fluid particle are known as material coordinates. And likewise, material variables are the space coordinates together with time are known as material variables. And material time derivative, since the Lagrange form of representation studies motion behavior by following each particle individually, the time derivative of each function is thus known as material time derivative, which is denoted by d by dt. It is also known as a total derivative, जिसमें हम टाइम के लिहाज से भी वेरिएशन और स्पेस के लिहाज से भी वेरिएशन दोनों को एट अ टाइम एनालाइज करते हैं, तो वो मटेरियल टाइम डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव कहलाएगा. ज़रूरी है, एक चीज़ आप ज़रूर याद रखें जो कि नोट की फॉर्म के अंदर आई हैव रिटन हियर, दैट इन द Lagrange form of field representation, displacement is the base quantity and other properties like velocity and acceleration are derived quantities. जबकि Euler's के केस के अंदर ये नहीं होगा. We will see that. In the Euler form of field representation, no attention is paid to the motion of individual particles. Rather, that state of motion of particles is studied at a fixed location as a function of time. Individual particles की motion, जैसे कि हम fluid के description के लिए भी Euler's form के अंदर individual particle की motion को study नहीं करते, ऐसे ही field के अंदर भी हम जनाब Euler's form के अंदर individual particles को deal नहीं करते. Rather than we go for the state of motion of particles at a fixed location as a function of time. So, special positions are each fixed location is called special position and the state of motion is known as special description. वहाँ पे जो कि material description के अंदर particle की motion was associated with the material description, जबकि यहाँ पे state of motion is known as special description. And special coordinates are each fixed location can be described by a set of space coordinate known as special coordinates. And special variables are the space coordinates together with time, and when we combine the space coordinates with time, then collectively they are called the special variables. Note that in the Euler's form of field representation, velocity is the base quantity and other properties like displacement and acceleration are derived quantities. जबकि Lagrange form of field representation के अंदर displacement was the base quantity. So this is a big difference between these two. कि इस केस के अंदर displacement and acceleration are derived quantities in the case of Euler's form of field representation, whereas in the case of a Lagrange form of field representation, displacement was the base quantity and velocity and acceleration were the derived quantities. Now, there is a well-known formula for the de Lambert-Euler acceleration formula known by the name of de Lambert-Euler acceleration formula. अगर आप previous lecture के अंदर recall करें तो हमने total derivative को calculate किया था in the form of local and convective part. So, किसी भी arbitrary function f के लिए we wrote that and we find out that total derivative of function f is the sum of its local and convective derivative, which is given in equation 1 in this slide. तो अगर इस function f की जगह हम velocity substitute कर दें, and obviously you should know that derivative of velocity or change in velocity is acceleration, and the relationship between the velocity and acceleration is given in equation 2 here. So अगर हम simply f की जगह arbitrary function की जगह हम velocity substitute कर लें तो we'll get acceleration as an output, or the derivative of velocity, the total derivative of velocity as an output, which will be
the sum of convective derivative of velocity and the sum of local derivative of velocity. This is known as, this equation 3 is known as Lambert-Euler acceleration formula. It is necessary here कि आप देखें कि acceleration अब इसमें दो तरह की हो रही है. एक part जो है वो local acceleration यानी local change in velocity और दूसरा deals with the convective change in the velocity. So ये दो तरह के velocities को combine करके, जैसा कि total derivative के case के अंदर दो तरह के derivatives को combine करके हम total change, दो तरह के changes को analyze करके हम total change determine कर रहे थे. Exactly वैसे ही दो तरह की change in velocity gives us acceleration and the collective acceleration. So if you are interested in calculating only the local rate of change of velocity or local acceleration, you just simply have to calculate the partial derivative of velocity with respect to time. And if you are interested in calculating only the convective change in the velocity or the convective acceleration, then you just have to calculate the convective part of acceleration. And obviously if you need the total acceleration or total change in velocity, then आपको convective change in velocity and local rate of change of velocity ये दोनों find करके इनको combine भी करना पड़ेगा. Early question 3 is known as the Lambert-Euler acceleration formula. Here which I explained in the previous slide, the total acceleration of a particle is dv by dt. Local acceleration of a particle is partial v by partial t. Convective acceleration of a particle is v dot del v, जो कि convective part of the Lambert-Euler acceleration formula. अगर cylindrical coordinates के अंदर इसको represent करें तो उसके लिए ये question बनेगी which is given at the bottom of this slide, and in rectangular coordinate system equation 3 in scalar components. If you see the acceleration here, अगर उसको physically छोड़ भी देंगे what is acceleration, you have nothing to do with that. अगर उसको सिर्फ mathematically भी लेके चलेंगे what is acceleration, तो then इसके तीन components बनेंगे, और अगर इसको scalar form के अंदर represent किया जाए तो वो तीन components इस तरह लिखे जा सकते हैं which are written here in this slide. जो x component of acceleration है, this will deal with the total change in the x component of the velocity, and likewise y component of the acceleration will be according to the total change in the y component of the velocity, and likewise total change in the z component of acceleration is due to the total change in the z component of the velocity. And these are written in the same manner here. If you can see that partial u by partial t is the local change in u, which is the x component of the velocity, and it is associated with the x component of acceleration. So x component of acceleration is the combination of local rate of change in the x component of the velocity and convective rate of change in the x component of the velocity. So चीज़ें इसी तरह smoothly run करेंगी चाहे आप इसको scalar form के अंदर भी लिखते हैं. Here u, v and w are the components of the velocity in the x, y and z directions respectively. Now there is an example I've written here for you. A velocity field say of the form ui plus vj plus wk is given, जबकि u, v and w की explicitly values भी given है. What do we have to find out? Determine the local acceleration. पहली चीज local acceleration हमने find करनी है. In the B part we have to find the convective acceleration, and in the C part the total acceleration at the point P1, 1, 1 and 2. So convective acceleration भी find करनी है, local acceleration, and then we have to combine and find the total acceleration, or points are given here in the form of this combination which is 1, 1 and 2. X is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to 1 and t is equal to 2 here. We'll try and see how this stuff works out and how we can find the rate of change here. Now it is given that u is equal to x plus 2y plus 3z and plus 4t square. So let's start by saying that since
So first of all, मैं ये u at this point P, इस पॉइंट P पे u की वैल्यू फाइंड कर लें. x is 1 plus 2 into y here is 1 z here is again 1 plus 4 t here is 2 and 2's square. This comes out to be 1 plus 2 plus 3 plus 16. So value of u at point P is equal to 22. Now we have to go for say partial u over partial t, which is obviously the local part of the change in velocity. So partial u over partial t here comes out to be 8t, and if we calculate at point P, this is the local rate of change in the x component of the velocity. Now given that u we have calculated and partial u over partial t, the local change in velocity is also being calculated, and we will say now find the same for the y and z components of the velocity. It is given that v is equal to x y z plus t. V at point P so x y z product of 1 1 and 1 plus t, which is 2, is equal to 3. So the value of v at point P is equal to 3. Partial v by partial t is equal to 1. So the local rate of change in the y component of velocity is equal to 1. Likewise, we'll calculate the rate of change in the z component of the velocity as well. If we go for it, it's given that w is equal to x plus y into z square plus 2t plus 2t. Then w at point P (2 into 1 plus 4 6) and partial w for partial t is equal to 2. So the local rate of change in W is equal to 2. Now अगर हमें local rate of change in velocity find करना, तो we will pursue with that, and we can simply
say that acceleration local is partial u by partial t I plus partial v by partial t j plus partial w by partial t k. And if we are to calculate it at point P, तो सिंपली जो हमने जो पॉइंट्स के ऊपर हमने वैल्यूज फाइंड आउट किए पार्शियल u by partial t, partial v by partial t and partial w by partial t की, those will be sufficient here. Partial u by partial t was equal to 16, partial v by partial t was equal to 1. So it is 16i plus j plus partial w by partial t is equal to 2 into k. So this is the local acceleration at point P. It's simply, और अगर इसका magnitude आप find करना चाहें तो you can also do that as well at point P. इसका mod find करें तो you should be able to find it in a rather easy manner. So you will get the local acceleration at point P. Now moving onwards, and if we are to calculate the convective part, so convective part of the acceleration will be, say जैसा कि scalar components मैंने आपको acceleration के दिखाए थे, तो you can simply ax was equal to convective part, obviously, yeah, not the local part, which is equal to u partial u by partial x plus v partial u by partial y plus w partial u by partial z. And likewise u partial v by partial x plus v partial v by partial y plus w partial v by partial z. And similarly az will come out to be u partial w by partial x plus v partial w by partial y plus w into partial w by partial z. Similarly इनको differentiate करके इनकी values यहाँ पे substitute करेंगे, and if you are to calculate it at particular points, so you will substitute say 1, 1, 1 and 2 in all these cases, and ultimately convective acceleration will come out to be axi plus ayj plus azk. This is the total acceleration, total convective acceleration, which you can calculate, and I leave it for you as an assignment कि this u, v and w we have calculated at point P. इनकी मखसूस वैल्यू है, सिर्फ आपने u, v and w के derivatives with respect to x, y and z calculate करने हैं, and you can simply compute this convective acceleration at this part. So I leave it for you as an assignment or as a home task, as an exercise, if you complete it, so that you can become familiar with
हाउ स्टफ वर्क्स हियर। एंड फाइनली अगर टोटल एक्सेलरेशन जब आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो टोटल एक्सेलरेशन इज सिंपली is the sum of local acceleration plus convective acceleration. So जो लोकल पार्ट एंड कन्वेक्टिव पार्ट को जब आप सम करेंगे तो यू विल गेट टोटल एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ विच इज़ द सम ऑफ द लोकल एंड द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इटसेल्फ। सो आई लीव इट अप टू यू कि आप सिंपल कंप्यूटेशन करके तो इस चीज़ को एनालाइज करें एंड यू शुड डिटरमिन कि हाउ इट वर्क्स। Now due to a shortage of time I'll simply skip and go to the last slide and I will come back to whatever remains। जो कुछ रहता है इस एक एग्जांपल मेरे ख्याल रहती है इस लेक्चर की करने वाली, वो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ उसकी कंटिन्यूटी बना लूँगा। I'll simply switch towards the last slide of this, towards the summary। Well with this I take you to the summary of this lecture। इस लेक्चर के अंदर शुरू में हमने we solved some examples and we saw कि किस तरीके से fluid between two plates is analyzed and हमने देखा कि हमने कैसे stresses find की between acting on the fluid between two plates। Then we studied the material description, material coordinates and variables। Then we went through the spatial descriptions, spatial coordinates and variables, and at the end we studied the Lambert Euler acceleration formula and we did an example of that। So this is today's lecture and I would like to compel you कि आप इसको ख़ास कर ये जो आज का कंप्यूटेशन वर्क था इसको ख़ुद करके इसको सॉल्व ज़रूर करें और इसको एनालाइज करें कि किस तरीके से सारी कंप्यूटेशन और एनालिसिस किया गया है, सो दैट यू शुड बिकम फेमिलियर विद हाउ दिस स्टफ। जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोड़ी गई हैं इसलिए कि आप उनको खुद सॉल्व करें, गो थ्रू देम बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आपके लिए इशू नहीं होने चाहिए, प्लस द फैक्ट कि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। आप उसको देखेंगे कि चीज़ें कैसे मर्ज अप कर रही हैं एंड हाउ दे बिकम पार्ट ऑफ द एनालिसिस of the fluid mechanics। Now with this this is the time of today's quote and today I chose the quote that true love means infinite tolerance for each other's differences। हमेशा से इंसानों के दरमियान इख्तिलाफ राय रहा है और ये रहेगा हमेशा तक, क्योंकि कभी भी दो इंसान एक तरह की चीज़ नहीं सोच सकते, एक तरह की बात नहीं कर सकते। सो इट ऑलवेज रिमेन्स लाइक दैट। सो इख्तलाफात के साथ जीना, इख्तलाफ राय का एहतराम करना, एक दूसरे की राय का एहतराम करना, दिस इज़ अ बिग थिंग। एंड आई जस्ट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई जस्ट वांट यू टू रियलाइज़ कि मोहब्बत का जब आप किसी दूसरे इंसान से, मखलूक से और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से, अपने मुल्क कौम में बसने वाले लोगों से अगर मोहब्बत रखते हैं तो इसका मतलब है कि यू शुड बी टॉलरेंट with the differences you have among yourself। लिंगुअल बेसिस के ऊपर और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अगर डिफरेंसेस हमारे दरमियान हैं तो वो रहते हैं हमेशा से, लेकिन इन इख्तलाफ राय का किसी भी ओपिनियन के ऊपर एक इंसान की राय दूसरे की राय से फ़र्क हो सकती है, लेकिन इंसानियत के एहतराम और इंसानियत की मोहब्बत का ये तकाजा है कि हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को बर्दाश्त करें और उनके साथ जिएँ। बिकॉज जब भी यूनिफॉर्म होने की तरफ जाएंगे तो कभी भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये इंसानी जबिल्लत है कि difference of opinions will always be there। So I want you my students to respect and to feel that difference of opinion is an ultimate reality। We have to tolerate these and we have to live with these। So मखलूक से मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि आप एहतराम शो करें और बर्दाश्त शो करें अपने डिफरेंसेस के लिए। जो चीज़ें आप में और दूसरों में कॉमन नहीं हैं उनके लिए एहतराम शो करें एंड इसके साथ ही सोसाइटी रहने के लिए अच्छी जगह बन जाएगी हमारे लिए। खुश रहें, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा आसानियाँ दें। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।